स्क्रीन नजर आ रहा है आपको सबको? जी यस सर। यस सर। So, in the last lectures, we studied the DC analysis of the Fvt devices or Fvt amplifiers. So, Fvt devices that we studied in the last lecture, that were JFET and MOSFET. JFET, based on their channel, we classify them into N-channel JFET and P-channel JFET. Similarly, MOSFET MOSFETs are also of two types: depletion type MOSFET and E-type MOSFET. In depletion type MOSFET, channel physically exists, and in E-type MOSFET, that is enhancement type MOSFET, channel physically doesn't exist. The channel is induced. So based on the type of channel, we further classify depletion type MOSFET into N-channel depletion type MOSFET and P-channel depletion type MOSFET. Similarly, enhancement type MOSFET is further divided into two classes: N-channel E-MOSFET and P-channel E-MOSFET. So they are three-terminal devices: drain, source, and gate. So according to two-port system theory, we require two input terminals and we require two output terminals. That is, we require one input port and we require one output port. But because of three terminals, FET can be one of the terminal. In case of FET, just like BJT can be taken common between the input circuit and output circuit. And that is why we have three configuration for configurations. For FET, what are those configuration? Because there are three terminals: drain, source, and gate. These are the three terminals. So by FETV means JFET, MOSFET, and MESFET. These are the three devices. So based on the available three terminal, drain, source, and gate, so in either case, one of the terminal is taken common. So based on the two-port system theory, we have three configuration. And what are those three configuration? Common source, common gate, configuration,
we simply write it CS, common source, common drain, also called source follower, configuration, we call it CD. So similarly, we have common gate configuration. So common source amplifier circuit provides voltage gain with phase reversal. Provides voltage gain AV with phase reversal. By phase reversal, we mean that the input signal and the output signal are out of phase by 180 degree. So in common source amplifier, the signal is applied at the gate terminal and the output signal is taken, or the output is taken from the drain terminal. Common drain or source follower configuration. So common source configuration, the analogous in case of BJT is common emitter configuration. Common drain or source follower configuration provides unity gain with no phase reversal. And the major application of this configuration is impedance matching. Impedance matching. Voltage gain, unity voltage gain or voltage gain AV is equal to 1. Unity voltage gain with no phase reversal. Input and output signal are in phase. That is, phase shift is 0 between input signal and output signal. They are in phase. So the major application of common drain or source follower is impedance matching with the voltage gain is 1 or unity with no phase reversal. And then analogous in case of BGT is common collector or emitter follower configuration. So in case of common drain configuration, the signal is applied at the gate of the terminal and the output is taken from the source of the device. Common gate configuration provides voltage gain with no phase reversal. Means that is zero phase shift. So input signal and output signal are in phase. Here with phase reversal means 180 degree phase shift
between input and output signal. Zero phase shift. So in common gate configuration or common gate amplifier circuit, because the gate is common between input circuit and output circuit, so the signal is applied at the source of the amplifier circuit and or source of the FET, and output is taken from the drain terminal of the device, and there is no phase shift between input signal and output signal. Both are in phase and provides voltage gain. So this, in the analogous, in case of BJT, is common base configuration. So these are the three configurations for FETs, JFET, MOSFET, and MESFET. Any question? No, sir. Clear? Yes, sir. Okay. So one thing should be kept in mind: the voltage gain of BJT amplifier is higher than those of FET amplifiers. So whenever we use the term gain, gain means voltage gain. So we are familiar now with the FET devices. The depletion type MOSFET or depletion type MESFET circuit is much higher input impedance because of the presence of silicon dioxide layer as compared to similar JFET configuration. By configuration means, for example, we have depletion type MOSFET and it is common source amplifier using depletion type MOSFET, and we have a common source amplifier with JFET. So the input impedance of depletion type MOSFET circuit will be higher than that of JFET amplifier circuit. So overall, the input impedance of FETs are larger than as compared to BJT. However, the output impedance of JFET and BJT, they are comparable, they are similar almost. We will see later on. So BJT is a current control device. By it, we mean that by current control device that the input current controls the output current. It means the small current, which is the base current, so the base current is small as compared to output current, which is the collector current. So collector current is large. So the input current controls the large current. The small input current controls the large output current. So BJT is a current control device. On the other side, FETs are the voltage control devices. So in case of FET, the input voltage controls the output current. So the controlled phenomena is the same. In both devices, the current, the output current is controlled. In BJT,
input current controls the output current. In FET, the input voltage controls the output current. output current. So FETs are voltage controlled devices. Clear? Yes, sir. So in both cases, the output quantity is the current that is being controlled. And we are familiar with the Shockley equation, which gives the relationship between the drain current And and VGS. Yes, sir. So because the input impedance of FET is high, so the AC model for FET is simpler as compared to that of BJT. So the AC model for FET is simple as As compared compared to to that BGT. of BJT because of the high input impedance. So what is the when we represent this high input impedance? If the resistance is very high, so what is the solution? How we represent this high resistance, very high resistance? So By open open circuit. circuit करेंगे. By open Yes. circuit, we represent a very large resistance by open circuit equivalent. Open circuit equivalent. Equivalent. So in case of BJT, the amplification factor, because we know that in case of BJT, input current is IB, the output current is IC. So output quantity divided by input quantity, it is the gain. Current divided by current, it is the current gain. For BJT, input quantity IB, output quantity I see. IC. The ratio of these two quantity is called Current beta, gain. Amplification. current amplification factor. So here I'm using B and C. These are the capitals. So this is DC base current. Remember, please. For AC, we use the small case subscript, and this is the DC collector current. This C, this subscript is a capital letter. This B is a capital letter. So for DC, we use capital letters in Yes. Yes, subscript. sir. So this is for BGT. For FET or JFET, because we will consider first JFET, but in general, for FET, input quantity is the current, sorry, voltage, which is VGS, and the output quantity is the current, which is the drain current. So output quantity divided by, so this is the amplification factor. Now, in case of FET, which is the important parameter, ID divided by VGS, and this ID by VGS, because this is current divided by resistance, and we know that
According to Ohm's law, V is equal to I R is equal to V over I, and the reciprocal of R is the conductance I over V. This is Ohm's law. Yes, sir. So this is called conductance, but here this is the output quantity and ID is the output quantity, which is the input quantity. So we use the term transconductance, and this is represented by Gm. This quantity is called transconductance. समझ आ रही बात की वाइट कंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ करंट टू द वोल्टेज, but here we have output quantity and input quantity. The output quantity is the current, the input quantity is the voltage. That is why you use the term transconductance. So the prefix trans means that this transconductance Gm relates the input and output quantity. It is the relationship between input and output quantity. Any question? नहीं है सर. क्लियर हुआ? तो बीजेटी के केस में Yes, हम sir. बीजेटी के केस में हम बीटा की बात करते हैं और एफईटी के केस में हम जीएम की बात करते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस. So it is the important parameter that we will see this parameter when we will be discussing the AC model for the FET. Similarly, we will also be discussing just like, so we are familiar with the BJT. The major application of BJTs are amplification and switching action. So FET is also similar application. It can be used as an amplifier or it can be used as a switch in logic circuit or in digital circuits. So mostly the JFET and depletion type MOSFET and depletion type MESFET, they are used for amplification purpose. And in enhancement type MOSFET, they are popular for digital application. They are used in digital circuitry, and especially the CMOS technology, the CMOS circuits, which require very low power consumption. So CMOS technology consists of both N-channel E MOSFET and P-channel E MOSFET. CMOS. C. Complementary metal oxide semiconductor. Complementary metal oxide semiconductor. So CMOS technology consists of both type of E MOSFET, N-channel E MOSFET and P-channel E MOSFET. That is why they use the term complementary, just like NPN and NPN and PNP BJTs are the complement of each other. So E-channel, N-channel E MOSFET and P-channel E MOSFET are the complement. So that is why they use complementary word here.
complementary metal oxide semiconductor technology used for the fabrication of digital circuitry like microprocessor and other digital circuits. So the important circuit features, what are the important circuit features? Voltage gain, input impedance, and output impedance. By this we mean that when we analyze an amplifier circuit using FET, so during the process of analysis, we have to determine the circuit feature, circuit parameter. Which one? Voltage gain, input impedance, Input impedance, output and impedance. output impedance. You are familiar with these three terminologies. But in case of BGT, we also determine the current gain. But here we don't need to determine the current gain. Why? If I ask the question, why we are not determining the current gain for the FET amplifier? सर जिसमें इनपुट करंट जीरो होते हैं. क्योंकि आपके पास इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है, तो उस इनपुट इम्पीडेंस को हम ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनपुट करंट तो जीरो हो गया. आउटपुट करंट Yes, आपके sir. पास ड्रेन करंट है, तो ड्रेन करंट डिवाइडेड बाय द इनपुट करंट एंड द इनपुट करंट इज जीरो, सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो मींस undefined or infinite or undefined. So that is why we don't need to determine the current gain for FET amplifiers. Clear? Yes, sir. So the important circuit features are voltage gain, input impedance, and output impedance. And the current gain is an undefined phenomena. That is why we don't need to determine the current gain. So there is another approach. We can also analyze the FET amplifier using the computer software. For example, using PSpice or Multisim, and we can perform DC analysis to obtain the circuit bias condition, and we can perform AC analysis to determine the small signal voltage gain. So using the PSpice transistor models, we can analyze the circuit using the specific transistor models. So one thing should be noticed here. When we perform AC analysis, we require a model. Without model, it is difficult to analyze, to perform AC analysis of an amplifier circuit. So we require a model to perform AC analysis of an amplifier circuit. Keep in mind. So what is the objective of the AC analysis? What was the objective of the DC analysis? You remember? Yes, sir. What was DC the need? What was the need of DC analysis? Q पॉइंट के लिए होता. Yes, to establish the Q point. And the aim or objective of the, or the need of the AC analysis is to determine the Yeah. voltage gain. To Yes, sir. determine Yes. the voltage gain. So we can use computer software for the analysis purpose, both DC and AC analysis, or we can use some software language just like C++ to perform both DC and AC analysis and get the results in a special format. So that was the introduction about the FETs, about the features of the circuit. Excuse me, sir. हाँ बात करें.
सर ये जो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सर ये मैथमेटिकल अप्रोच यूज़ करते हैं कि सर ग्राफिकल अप्रोच? ये तो आप देखें, आपने इसको, वो जो होता डीसी एनालिसिस, पी स्पाइस, मैंने तो खुद इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बैकग्राउंड में तो सारे आपने मैथमेटिकल अप्रोच ही अप्लाई करना है ना। वो जो वो जो करेक्टरिस्टिक्स आप ड्रा करते हैं, आई एम नॉट फेमिलियर विद दोज सॉफ्टवेयर, लेकिन नॉर्मली आप देखें, अगर आपके पास फार्मूले हैं और आप फार्मूले जो है ना आप उसमें करें, तो मैथमेटिकल वर्क तो कंप्यूटर तो आपके लिए आसानी से कर सकता है ना, क्योंकि मैथमेटिकल वर्क सर जो है, उसमें बहुत है सर, ग्राफिकली भी होते हैं, मैथमेटिकली बहरहाल भी आई एम होते नॉट हैं सर। फेमिलियर, लेकिन ये है कि आपको यस। दोनों सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ग्राफिकल भी प्रोवाइड करते हैं, मैथमेटिकल भी, लेकिन आपको चूंकि मैथमेटिकल अप्रोच है वो कम्प्लेक्स है, काफ़ी कम्प्लेक्स है, तो कंप्यूटर तो आपके लिए आसानी से जो है ना वो आप उसको प्रोग्राम करके आपके लिए सोल्यूशन दे सकता है, रिजल्ट आपको दे सकता है, ठीक है ना। यस सर सर। एक और बात सर, ई हाँ मॉसफेट डिजिटल सर्किट में यूज़ होते हैं, तो सर हाँ, जो सीमॉस की क्या खासियत है कि हम खास वो यूज़ करते हैं सर? सी मास में तो वही ई मासफिट ही है ना, एक्चुअली सी मास टेक्नोलॉजी ई मासफिट के ऊपर ही बेस करता है, टेक्नोलॉजी ई मासफिट की है ना। सी मास जो है वो ई मासफिट के ऊपर बेस, लेकिन सी मास के अंदर दोनों जो है, दोनों ई मासफिट टाइप्स मौजूद होते हैं, एन चैनल भी और पी चैनल भी। तो इसका जो बेसिक सर्किट है वो आई थिंक सो सी मास इन्वर्टर है, और उसके बाद आप कोई भी लॉजिक जो है ना लॉजिक फंक्शन, एंड फंक्शन और फंक्शन और कोई भी फंक्शन आप इससे परफॉर्म कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। तो ये थैंक जब लॉजिक सर्किट स्टडी करेंगे तो इसमें सारे जो है ना ये आएंगे, इसमें लॉजिक फैमिली स्टडी करेंगे तो उसमें जो है, लेकिन फंडामेंटल जो है उसमें, क्योंकि ई मासफिट पे डिपेंड करता है, तो आपको ई मासफिट का पता होना चाहिए कि ई मासफिट की क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों पी टाइप के एन टाइप के, तो फिर जो है ना आप सी मास की जो ऑपरेशन है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। एनी क्वेश्चन? नहीं है सर जी। ठीक है, समझ आ रही बात की? सो यस सर। द थिंग्स आर क्लियर। तो जो इम्पॉर्टेंट फीचर है इसकी एफईटी एम्पलीफायर्स की, उसकी हाई इनपुट एम्पीडेंस, जिसकी वजह से जो एसी मॉडल है वो सिंपलर हो जाता है एज कंपेयर टू बीजीटी मॉडल, एसी मॉडल। सो the important parameters of FET models are GM and the output resistance RD। इन दो को हमने जो है ना वो हमने जो है ना इनको डिटरमिन करना होगा, उनको डिफाइन करना होगा। सर एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर जीएम है और दूसरा क्या है एक अभी आपने जो आपके बताया? पास आउटपुट रेजिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं आरडी, यस वो सर, आ रहा है थैंक अभी, इसमें हो जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा। ये जो है ना सर्किट मॉडल जो हमारे पास बनेगा, मॉडल या सर्किट बनेगा, इक्विवेलेंट मॉडल और इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दी एफईटी और जेएफएट, तो उसमें ये दो पैरामीटर आपको नजर आएंगे। तो जो मॉडल हम डेवलप कर रहे हैं जेएफएट के लिए, तो आपसे क्वेश्चन एक कोई पूछ सकता है कि मॉडल की हमें क्यों जरूरत होती है। फॉर एसी एनालिसिस ऑफ जेएफएट configuration we require a small signal model, so the model should be developed। पहले हम मॉडल को डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद उसका जो है ना एनालिसिस हम करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, that the model should be developed first and then the configuration should be analyzed to determine the voltage gain, to determine the input impedance and to determine the output impedance। तो जो मॉडल होगा, मॉडल उसमें एक जो है ना खूबी होनी चाहिए कि वो जो हम कहते हैं ना कि एफईटीज आर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस, तो ये जो फिनोमिना है ना ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए मॉडल से कि किस तरह वोल्टेज जो है, इनपुट वोल्टेज आउटपुट करंट जो कि ड्रेन करंट है उसको कंट्रोल कर रहा है। सो दिस फिनोमिना शुड बी रिफ्लेक्टेड
So the major component of the AC model will reflect the fact that an AC voltage that is applied at the gate terminal should control the level of current from drain to source. So input voltage, which is VGS, and the output current, which is the drain current from drain to source, or it is the current through the channel between the drain and source terminal. This phenomena, this fact should be reflected in the model. So gate to source voltage, VGS, which controls the drain to source or the channel current in case of FET or in case of JFET. So because we start our journey with the JFET. So JFET small signal model, this is the topic name. माइक ऑफ किया करें प्लीज। ये अब्दुल्ला जरगम जो है, कोई भी स्टूडेंट है वो उसका माइक ऑन रहता है अक्सर। माइक ऑफ करें जो है, इसको म्यूट किया करें प्लीज। JFET small signal model. So VGS controls ID. So FETs are voltage control devices. So this fact should be reflected from the AC model. And this phenomena, this is represented by current source GM-VGS. I'm not going to detail now, but you should be familiar with this phenomena. This fact, VGS controls ID, will be reflected as a current source GM-VGS in the AC model. So we studied in chapter 7 that DC gate to source voltage, VGS controls the level of drain current. And this relationship was defined by Shockley, and the equation so called the Shockley equation. So Shockley equation is applicable to JFET and D MOSFET and D MESFET. What is Shockley equation? ID 1 minus VGS Vp whole square. So these all are DC quantities. So DC gate to source voltage controls the DC drain current.
and this phenomena is given by the Shockley equation, which relates the drain current and the gate to source voltage. Now, the change in drain current, change in drain current change in drain current we represent this by delta ID, and due to change in gate to source voltage, we call it delta VGS. Now these two quantities are related by phenomena called what we call it, यहाँ पर देख लेना ID related with VGS. How we relate the change in drain current with the change in gate to source voltage delta VGS, किस तरह रिलेट करेंगे? Transconductance. So delta ID is equal to delta VGS, and this phenomena is Gm, transconductance. So change in drain current and change in gate to source voltage, delta ID is equal to Gm delta VGS. And this delta ID and delta VGS, they are observed with respect to Q point or operating point. Keep in mind. So we can also write, बात समझ आ रही है? ये डेल्टा आईडी और डेल्टा वीजीएस कहाँ पर मेजर करते हैं? क्यू पॉइंट तो फिक्स है ना आपके पास, उसके ऊपर तो आपने वैल्यूज फिक्स किए हैं, वीजीएस क्यू एंड आईडी क्यू. अब विद रिस्पेक्ट टू क्यू पॉइंट जब आप वेरिएशन करते हैं, जब आप सिग्नल अप्लाई करेंगे तो करंट्स में वोल्टेजेस में चेंज आएगा. वो चेंजेस जो आप ऑब्जर्व करेंगे, उस दोनों का जो है अपने इन दोनों क्वांटिटी का रेशो आपने लेना है, और उस रेशो को आप जीएम से रिप्रेजेंट करेंगे. सो जीएम डेल्टा आईडी बाई डेल्टा वीजीएस. ये अनम यूसुफ कौन है? प्लीज, अनम यूसुफ कौन है? ये लाइन ड्रा करा. वो इज अनम यूसुफ. काशिफ, काशिफ. सर जी, ये उसका नाम लिख के कोई कर रहे हैं, वो तो क्लास नहीं लेती. तो ये कौन है, जरा बता दें कौन लिख रहा है? सर मैंने मैसेज कर दिया, डोंट राइट. मैसेज मैंने कर दिया प्राइवेटली. अच्छा, पता नहीं कौन है. ये अगर इस तरह नहीं ना है इस तो तरह सर ना करें, रिमूव वरना जो है ना फिर उसको मैं जो भी है जरा बता दें. इसमें ये जो लिस्ट है, इसमें जो भी आपको जो है ना अननोन नाम नजर आ रहा है, उसको मैं डिलीट को रिमूव करता हूँ लिस्ट से. कौन है इस सर. लिस्ट ये में? फिर से लिख रहे हैं, कर दे सर, कर दे सर रिमूव. क्लिक करे सर, वो रिमूव हो जाएगा. मैं जरा लिस्ट देख लेता हूँ. आप लिस्ट आप देख सकते हैं. हाँ सर, लिस्ट पे देखें, लिस्ट में आपको कोई नजर आ रहा है जो इस किस्म का जो है ना वो? सर भाग गया भाग गया ना. बस ठीक है, सही. यस. तो इस तरह जो है ना हरकतें नहीं करनी चाहिए. इसको क्या करूं, इसको किस तरह रिमूव करूं? लाइन को जरा गाइड करें. सर हम कोशिश करते हैं पर ये रिमूव जब तक उसने नहीं किया होगा, आई थिंक नहीं होता. सर मैं ट्राई करता हूँ.
आप करें ट्राई। सर ये लाइन जिसने मारा है वो रिमूव कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, सही, बस ठीक है, कोई मसला नहीं नज़र आ रहा है, बस जो भी किया, लेकिन वो फिर थोड़ा सा जो है ना आप लिस्ट को देखा करें, इधर उधर जो लोग जब आते हैं ना ये प्रॉब्लम करते हैं। जी सर। अच्छा, जी सर। तो अभी हम देखेंगे कि ग्राफिकली इसको किस तरह हमने डिटरमिन करना होगा। जीएम को ग्राफिकली किस तरह हम डिटरमिन कर सकते हैं। इक्वेशन तो हमें नजर आ गया ना कि जीएम जो है ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ जीएम। तो ग्राफिकली जो है हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना हम मालूम कर सकते हैं। सो वी कैन फाइंड जीएम which is actually the slope of the transfer characteristics at the point of operation or Q point, quiescent point. किस तरह हम मालूम कर सकते हैं? How do we determine the GM graphically? Is the slope of transfer characteristics at the point of operation or Q point, that is quiescent point. तो आप जरा देख लें, रिपीट करें सेंटेंस के वाला। यानी ग्राफिकली हम जीएम किस तरह मालूम करते हैं। So Gm is the slope of transfer characteristics at the point of operation. बात समझ आ रही है? अभी देखते हैं ना, ग्राफिकली हम देखते हैं स्लोप ऑफ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स Gm is the slope of transfer characteristics at the point of ये पॉइंट ऑफ ऑपरेशन operation or Q point. ठीक, अभी समझ आ रही इस बात की? यस सर। तो यस स्लोप, सर। स्लोप हमें पता है, स्लोप किसके बराबर होता है, हम नॉर्मली एम से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस पे आपके पास करंट होता है और एक्स एक्सिस पे आपके पास वोल्टेज होता है। क्लियर? तो पहले हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करेंगे। कितने पॉइंट्स चाहिए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करने के लिए? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट्स। IDSS, VP, VP divided by 2, IDSS divided by 4। तो कोई भी Q पॉइंट आप ले लें। So the slope, let's say this is our Q point. So the slope at the Q point, तो यहाँ पर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें। तो एक्चुअली आप करेंगे क्या,
आप डेल्टा VGS यानी VGS में चेंज लाएंगे तो करेस्पॉन्डिंग चेंज आएगा करंट में। ये है आपके पास डेल्टा ID और ये है डेल्टा VGS। समझ आ रही है? सो द स्लोप of the transfer characteristics at the point of operation RQ point is actually Gm. So Gm is equal to delta Y by delta X, that is delta ID by delta VGS. Any question please? समझ आ रही है? यस सर। तो आप जरा देख लें, इस ग्राफ को देख लें। मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं इधर से। लेट से मेरे पास क्यू पॉइंट, एक दूसरा क्यू, मुख्तलिफ क्यू पॉइंट हम ले सकते हैं। डेल्टा ID, डेल्टा VGS। GM की वैल्यू कब इंक्रीज हो रही है और GM की वैल्यू कब डिक्रीज हो रही है? मतलब IDSS की तरह स्लोप जा रही यस यस, Yes, sir. क्योंकि वर्टिकल लाइन की तरफ जब हम जाते हैं तो GM इंक्रीज होता है। GM increases as we progress from VP to IDSS। IDSS and vice versa। ठीक है ना? समझ आ रही है? तो GM इंक्रीज होता है जब हम VP से IDSS, जब हम वोल्टेज एक्सिस से करंट एक्सिस की तरफ जाते हैं, और GM डिक्रीज होता है। तो ये देखें, अगर मैं लेट से ये मेरे पास GM1 है और ये मेरे पास GM2 दे रहा है, इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है, तो आपके ख्याल में कौन सा बड़ा होगा? इस ग्राफ को देख लें, GM1 will be greater than Greater than GM2। GM2. समझ आ रही है? And so on. So as we proceed, or as we move from VP, or as we progress from VP to the IDSS, GM will increase, or as we progress from IDSS towards VP, GM will decrease. Decrease. Yes. So how we determine GM? At the point of operation or Q point on the transfer characteristics curve, we simply choose the finite increment in VGS or in ID about the Q point, and then we find the corresponding change in ID or VGS respectively. So the resulting changes, once we observe, we just put in the above equation, GM is equal to delta ID or delta VGS, and we get the desired value for GM. क्या करेंगे आप with respect to Q point डेल्टा VGS में इंक्रीमेंट ऑब्जर्व करें, करेस्पॉन्डिंगली आप डेल्टा ID ऑब्जर्व करें, दोनों का रेशो ले लें और आपको जो है ना, एज रिजल्ट आपको GM मिल जाएगा। ठीक है? समझ आ रही है? तो आप पे डिपेंड करता है। डेल्टा ID ऑब्जर्व करें, डेल्टा VGS आपके पास आ जाएगा, दोनों का रेशो ले लें, GM आ जाएगा। या डेल्टा VGS में आप इंक्रीमेंट, जो फाइनाइट इंक्रीमेंट है, उसको आप चूज कर दें, करेस्पॉन्डिंगली डेल्टा ID को ऑब्जर्व करें, दोनों का रेशो ले लें, डेल्टा ID बाय डेल्टा VGS, यू गेट द वैल्यू ऑफ GM। एनी क्वेश्चन प्लीज? एनी क्वेश्चन? तो अब ये देखें, यहाँ पर और यहाँ पर इधर GM की वैल्यू क्या होनी चाहिए और इधर GM की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन दो पॉइंट्स के ऊपर। सर VP पे 0 होनी चाहिए और IDS पे इन्फिनिटी। इस पे इनफाइनाइट नहीं, मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम को हम रिप्रेजेंट करते हैं GM0। GM when VGS is 0 0। when VGS is 0 and VP when IDSS is 0।
तो यहाँ पर GM 0 होगा और यहाँ पर GM मैक्सिमम होगा, and this maximum value is represented by GM naught. So maximum value of GM is GM 0 when which parameter is 0? When VGS VGS 0. ये 0. ठीक, एग्जाम्पल 8.1 गिवन है आपको, एग्जाम्पल 8.1, ठीक है ना। मुख्तलिफ VGS की वैल्यू गिवन है आपको, जो है तकरीबन उसमें 3 Q पॉइंट गिवन है। तो एग्जाम्पल यही, अगर आपको समझ आ रही है ये एग्जाम्पल, इसको मैं नेक्स्ट साइड पे, जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही आप इंटरप्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली इंटरप्ट करें अगर समझ सही नहीं आ रही। अब ये देखें, ये लाइन जो है ना परमानेंटली अभी यहाँ पर मौजूद है। सर आप मीटिंग इस तरह फिर करें, आगे ये मीटिंग इन करे, दोबारा हम रिलॉग इन करेंगे तो ये सब कुछ जाएगा। बस फिर तो ठीक है, फिर इस तरह कर लेता हूँ ताकि ये जो लाइन है ये खत्म हो जाए। वैसे 40 मिनट में एंड होता है, अभी अपडेट हो गया, एंड नहीं हो रहा। नहीं अभी ब्रेक नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूस है। अभी वो जो चीज़ थी ना कि उसमें ब्रेक वाले, वो तो ये सर जो है ना अभी जो एक जी फाइल है वो मैंने अपडेट कर लिया, तो अभी ये कंटिन्यूस रहेगा, मतलब ब्रेक नहीं आएगा दरमियान में। ठीक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में लाइन जाने दो या रहने दो, कोई मसला तो नहीं कर रहा। सर जाने आप दीजिए लाइन। सर मैं आपको तरीका बताता हूँ, रिमूव हो जाएंगे सर। हाँ बताएं क्या करें इसके साथ। सर आपके ऊपर एक ऑप्शंस का बार होगा स्क्रीन के ऊपर, जूम की ऑप्शंस का। हाँ क्या बार है? उसके एंड पे मोर का ऑप्शन होगा, मोर हाँ, पे क्लिक करें सर। क्लिक कर लिया। मोर पे नीचे जाएं सर, इधर लिखा होगा अटेंडी एनोटेशन, डिसेबल अटेंडी एनोटेशन हाँ या ये हाँ हो डिसेबल गया, एनोटेशन। वो कर दिया। ये सर, तो उसके साथ क्या होगा अभी, क्या करूं समझे उसके? जो लाइन आई इसके बाद कोई नहीं कर सकेगा, पिछली लाइन का मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं वो तो है, लेकिन इसमें अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है न्यू ना मीटिंग इसमें, में बताते ना। हाँ, वो न्यू मीटिंग में आप बता देते कि कर नहीं सकेगा। सर मीटिंग अब तो आप ओवर करें, हम दोबारा ले आएंगे, बस ठीक है हो सही, जाएंगे। मैं अभी जो है ना उसको एंड करता हूँ, नो प्रॉब्लम। यस सर।